सेकंड वाज कि प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम को कि जिसमें आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, यू वांट टू टेक इट टुवर्ड्स explaining it, or you want to take it towards descriptive portion, or you want to add something to the already body of knowledge. जो थर्ड पोर्शन रिसर्च का उन्होंने हमें बताया था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू द टाइमलाइन, that how would you approach a problem and how would you get the data in different time form, whether you are talking of a specific case study on specific thing or is it based on the action perspective. So this was basically the areas जिसमें हम टाइमलाइन को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मेरी रिसर्च है, it is either on the lines of 10 years. For example, the research on the glaciers was done over an era of 10 years. So every year they used to record the data. And after recording the data, they said this thing and proved it that the glaciers are shrinking day by day. So their timeline of the research was over a decade long. So it depends on the problem. And then we follow towards the methodology or the method or the approach with which we are going to analyze the complete data collection which we have undertook. And then later on, it would form part of the academia or the body of knowledge. This was my understanding as far as the research is concerned. Thank you. And Uh, now, Ji Umar. Gee, actually, it was as I just want to continue as my two classmates they said something about the research because first of all we have recognized in our research level and what we have learned from our previous research work that was that our access to the primary sources and the secondary sources were mostly we found it was very limited or mostly we follow the mixed form of research in our institutions because most of our colleagues were also doing the research and they were facing different problems, especially in the previous topics. So if I talk about my research topic and how I made it, because we have also previously discussed this, because the topic was how foreign to, international tourism we can get the foreign direct investment through foreign tourism in Pakistan, and how we Mhm. can give a soft image of Pakistan because like the primary sources, how we can get the data was not available, accurate data if we divide the things and efforts for the decades, and the reliable data of the government department, and every department was the data primary data was changed Uh-huh. and it was nothing and will when we completed our research work and we just put up for the plagiarism, things were totally different, Okay. And and why, then we why, why, realized. why Ji, do you think that things were totally different? I yeah, mean, different than what you have uh, 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 attained through your research, the effect and was what was research the ground reality? because that we found out that so many works internationally the people have done it not only in the Pakistan, but you are Mm-hmm. not the first one because we just followed the wrong path and then we corrected ourselves. Right. Okay? After that, this then I found that I am doing it for the first time, and after that, going through the plagiarism process, Mm-hmm. because first of that, the sources and access to the sources is very important, and Exactly. in my point of my experience, which I had. Mm-hmm. Ji, Okay. ji. What about you, Rush and Tuba? Yes, ma'am. Ma'am, we have always been taught that it is basically a systematic or creative way of undertaking a problem and then finding out the ways to solve the problem to increase the stock of knowledge. And all this process of research and involves an organized inquiry into the inquiry that involves the process of collecting the data, then documenting it, critically evaluating the information, and analyzing and interpreting that data,
in Mm-hmm. accordance with the suitable methodologies set by the specific professional fields and academic disciplines. Mm-hmm. Okay. Arush? Huh. In my experience, ma'am, it was mostly secondary data which I used in my research, visiting to libraries, and I mostly used I relied on published work using books and different journals. Like Mm-hmm. it wasn't interview based research. Uh, I just found it out the gap between uh, the literature. My research was regarding it was a current topic at the time, uh, a nuclear deal. Mostly it was quotes and material like that, like regarding international law and Mm-hmm. such way. Uh, that's my understanding. Acha, okay. I mean, we'll be discussing various things like survey, how to interview people, but before that, I mean, we have to, understand that how research is an integral part of our practice. And by that, some of you just mentioned your experience while you were doing your research. I'll tell you my story of how I did, how I, chose the topic and how I, was able to refine it to get it more focused. And even then, most of the, teachers and senior professors, they would discourage me that I would not be able to do a research that would be productive because I would be relying mostly on secondary data. Like Ruth said, that she had to rely on, available literature, and there was no primary source that she had quoted in her research. Now, when I was, interviewed for at our time, it was MPhil leading to PhD program. And when I was interviewed, I just had this thing in my mind that I'm going to do my research on West and Islam. Somehow, this 9/11 war had, war against terror had started. Muslim world was compartmentalized in a way. There was a stereotype in the West as far as Muslim world was concerned. So I just had, not knowing that what I would be doing, because by that time we were not enrolled in that PhD program as yet. It was my initial interview. So the three professors, senior professors, they have retired now. They said that you would not be able. This is a very broad subject. How are you going to cover it? Then my answer was that through the coursework, that uh, uh, I'll be, I'll try to get it more focused to narrow it down. Later on, this Bush doctrine came of, you know, either you are with us or against us. And one of the course was, I think, about major policies of, no, sorry, foreign policies of the major world and US foreign policy. While going through that, I came across one term, evangelical. So I started reading about that. I started reading about, um, the Crusade War, then how, there are different sects or denominations in Christianity, the 30-year wars and all that. So this, I got stuck to this word evangelicals. When I started reading about it, I came to know that President Bush was an evangelical. So, by the time I was done with my coursework, I
was, I mean, very clear about my research, and I said that I'll be doing my uh, PhD in evangelicals' influence on U.S. foreign policy and its impact on Pakistan. And the time frame that I had chosen at that time was President Bush two terms as president in the White House. Uh, then one of our course in charge, he said that he said it again that it would not be productive. You'll just be analyzing the uh, available literature. So even if, I mean, if that was the case, my analysis would have, added something more to the available literature, and I'm sure this might have happened with Roosh as well. It's not that you are relying on secondary data. That does not mean that you are not producing something new. I mean, you are trying to fill the gap. But the second question was when I mean, responded to my professor. His second question was that how would you be able to, interview people in United States, and particularly those who were, in President Bush cabinet during his two terms. And then when I mean, I started looking for, I mean, people who had done their research on evangelicals, but I could not find even one researcher who had done research on evangelicals or evangelicalism. So I started searching on the web. Then I came across the name of a professor in Malaysia. I mean, wrote to him, emailed him, asked for guidance. Then he uh, said that he has written a book on evangelicals. And I mean, I had to buy that book on Amazon. I mean, it was very expensive getting that book. So initially, I was a bit, reluctant, disappointed, you may say. But I keep on writing to people. I wrote to one professor in Austria. Um, I'm forgetting his name, but I'll remember and then I'll tell you. And Alhamdulillah, he's alive now. Then I wrote to Professor John Esposito, who was the president of Center for Muslim Christian Understanding at Georgetown. He offered me a fellowship. I went to US. I was able to meet many people. Then there another course came up that was on US foreign policy. I went to the hub of evangelicals, University of Florida, and Florida is again very conservative. Very, I mean, it is known for religious conservatives, Christian right in the US. So I was able to meet all those people. I mean, it's not you get disappointed by someone telling you that you would not be able to do something. Research, after all, is a research. So, I mean, one should not get disappointed with the non-availability of, material, literature, yeah, uh, primary sources. So that is, I mean, that happens with everyone initially. But once you are into it, you start writing your thesis, then I think, I mean, many ideas started pouring in, Uh, you open a book and some ideas would ooze out of that book. And I mean, you would then try to apply all those. Acha. Now, research ka, if I mean, as we all know that research is undertaken, I mean, within almost all professions. It is not that, I mean, we say that a student of or a scholar of international relations or pure sciences, social sciences, arts and humanities
I mean, they conduct research, or a student of university or a teacher of university, they conduct research. Research is done in NGOs, in government departments. I mean, we have three professionals here, senior professionals, who and Tuba as well. She's teaching. So, I mean, the three gentlemen, respected gentlemen, that when even their profession at times demand research. Okay, how, I mean, a particular set of mind, or a mindset can be changed, how to de-radicalize a particular society. So for that, they do their research. They have to, go to that area, study the background, their behavior, and all that. So research, I think, is everywhere. It is only just कि हम लोग कह देते हैं that it is, researcher is a is one who's associated with teaching, or is a student. So सर्विस आप लोगों में से किसी ने किए हैं? आपकी जो रिसर्च है, जो अभी आप लोगों ने एमफिल का किया हुआ है, नो, अच्छा, रूश, No, ma'am, service नहीं किए. अच्छा, वाहिद देन उमर खान एंड हसन यूसुफ से आप लोगों ने भी नहीं किया? नो मैम, नहीं किया हुआ। अच्छा, ओके। एंड क्वेश्चन एरिया कुछ? चलें. So, as I was telling you, that research is an integral part of, your practice. It is undertaken within most professions, more than a set of skills. Research is a way of thinking. जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ideas आते हैं, या आप एक you get your attention focused on one thing, then you start thinking about it, you examine it critically, or you examine the various aspects of that particular area very critically. You try to understand and then formulate guiding principles that govern a particular procedure, and developing and testing new theories that contribute to the advancement of your research, and that can help in your profession. So with this, I mean, it is like questioning, or it is your habit of questioning what you do, and a systematic examination of observation to explain and find answers for what you perceive, with a view to instituting, I would say, appropriate changes for a more effective, research. Now, if we are to, I mean, take up a few disciplines as examples, कि किस तरह से हर एक फील्ड में how do we go about research में, तो हेल्थ का फील्ड है, that would be totally different than other areas of pure sciences. फिर like for example, एक हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है, and then there is a health administrator. Their areas are again different. प्लीज आप लोग मुझे यू कैन इंटरप्ट मी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, या am I audible?
Yes, ma'am, you are audible. अच्छा, okay. अच्छा, Yes, so ma'am, you are audible. okay, thank you. Acha. So, what I was trying to say is, I mean, different areas, pure sciences hai, numerical sciences, आपके social sciences, these are research, but every research is different than the other one. फिर then, के research is about thinking, and then practice that thinking, or start working on an idea. At times it may be possible to ignore questions, because uh, at the initial level, uh, or at any other time, you may you would want to make an effort to find answers to your own initiative, okay? But for that you do not have sources. अभी जैसे आप लोगों ने कहा, या उमर खान ने कहा कि मतलब his research and end result was quite different, plagiarism वगैरह के बाद जैसी जो कुछ हुआ. तो इसी तरह, I mean, questions would come to our mind. We would like to find answers to an idea that is our own, because I mean, we do not want to be subjective. क्योंकि अगर if we are subjective, so we are following a line, towing a line that is already done by so and so. We want to be objective, so obviously many questions would come to our mind, and with that, those questions at times we'll ignore because we cannot find sources for that. Some of them that we are able to address then would lead again to those questions that we have been ignoring, since some of the questions have been answered, and that has led us to answer those questions which we were ignoring, because we by that time we would have found a source for them. फिर again, okay, or sometimes you may be required to obtain answers for effective application of your research idea के या research method जिसको हम कहते हैं. By the way, what is the difference between research methodology and research method? Ma'am, I think research methods are simply the methods that are used by the researchers to conduct the research, and methodology, it specifically signifies the way it is way of solving the research problem, like how we collected the data, how we analyzed it. Yes. What? So what data to collect, how to collect it, where to collect it from, how to collect it, and how to analyze it. ये research methodology होती है. Okay. So research method, if we are to explain that, maybe understand as all those methods uh, or techniques that are used for conduction of research. Therefore, it refers to the methods the researcher use in performing research operations. And all those methods which are used by the researcher during the course of studying his research problem are termed as research methods. Okay? Research methodology is a way to systematically, as Tuba just explained, to systematically solve the research problem. Acha, it may be understood as science of studying how research is done scientifically. In it, we study the various steps, just explained by Tuba, that are generally adopted by a researcher in studying his research problem, along with the logic behind them. Or per evaluation of research method is called research methodology. I'll be sharing these few slides with you through email. We can just to go through them. A research method, the scope is lesser than research methodology.
कि research methodology scope is more wider than research method. It is part of research methodology. और लाइक आई सेड कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ अब हम जब डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन से मतलब डायमेंशन हो सकते हैं रिसर्च के. Research method seeks to answer what did the researcher use to complete his research, whereas research methodology seeks to answer how did the researcher complete his study. So, main difference is what did the researcher use, कौन सा तरीका उसने इस्तेमाल किया और किस तरह से रिसर्च उसने कंप्लीट की. द डिफरेंट स्टेजेस आर रिसर्च मेथोडोलॉजी. जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, then research methods are the techniques and tools by which you research a subject or a topic, and methodology explains and justifies the techniques and tools by which you may proceed with your research. Like for example, we qualitative or quantitative या mixed methodology we say कि qualitative is sometimes descriptive, it is analytical, it is explanatory. Quantitative, we always say that there is some data connected or linked with the quantitative research methodology. And when we say that qualitative and quantitative both are used in any research, as we call it, that mixed method strategy or mixed methodology. In social sciences, we usually say that figures, any figure, quantification जिसको हम कहते हैं कि that is quantitative, and we mix that with qualitative, whether it is a descriptive research, analytical research, explanatory research, exploratory research, हर तरह की उसके साथ, then we mix it and we say कि it is a mixed methodology, a mixed strategy है. लेकिन when it comes to other disciplines like sociology है, social work है, sorry, ये आर्कियोलॉजी इस तरह से हो गया या दूसरे, तो उसमें फिर दे वो सर्वेस करते हैं, क्वेश्चनर्स करते हैं, एंड देन दे वो डिडक्ट करते हैं उसमें से अपना जो उनका की फाइंडिंग्स हैं. इंडक्शन और डिडक्शन वाला मेथड उसमें होता है, तो वो कहते हैं कि जी दैट इज क्वांटिटेटिव. लेकिन हमारे उसमें भी सिंपली से कि जी सोशल साइंसेज में, हालांकि सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, दीज आर पार्ट ऑफ सोशल साइंसेज, लेकिन उनका तरीका पे डिफरेंट हो जाता है. हमारे जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, लाइक आई कंडक्टेड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव research जहाँ पे when I've used the data from surveys, ठीक है, और उसमें फिर आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है कि I mean your target population, like for example is our madaris, and within madaris your target is a religious scholar, ठीक है. Now madaris ऐसे भी हैं कि where an imam can be the head of that madrasa, but he's not religiously literate to be called as a religious scholar. So whether he's your target or that religious scholar who is literate in religion, uski interpretation would be more authentic than the one sorry, who is religiously illiterate. तो वो टारगेट आप मतलब आपने वो बनाया, सैम्पलिंग आप इस तरह से करते हैं. एक आपने उनके इंटरव्यूज किए या वहाँ पे आपने सर्वे फॉर्म्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए, एक आपने रिलीजियसली स्कॉलर्स जो हैं उसमें किए. फिर देन अगेन यू डिवाइड दैट दो सैम्पलिंग इन के रिलीजियस स्कॉलर्स है तो वेदर ही बिलोंग्स टू a particular sect of Islam, one sect of Islam or the other sect of Islam. So इस तरह वो चीज़ें फिर आपकी क्वांटिटेटिव में आ जाती हैं जब आप उससे
फाइंडिंग्स या रिजल्ट जो है उससे डिडक्ट करते हैं। और क्वालिटेटिव में वही हो जाती है, नैरेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है एट टाइम्स नैरेटिव भी हो जाता है। लाइक अभी रूश ने और उमर खान ने जो बात की कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कागान नारान की तरफ दे you go and start asking people के मतलब how was the tourism industry in that area, or how were they, were the economy, was the economy of that particular area बिफोर 9/11 और आफ्टर 9/11। ठीक है, तो फिर आप मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं, तो वो एक तरह से वो आपका क्वांटिटेटिव में भी आ जाता है, लेकिन जब आप उन्हीं की चीज़ें फिर वो करते हैं तो नैरेटिव स्टडी भी आपकी बन जाती है। तो दिस इज हाउ मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम मेथडोलॉजी। Then research methods involve the task of conducting experiments, tests, surveys, and like utilizing the knowledge and skill learned through research methodology. Like what it is trying to say is that research method is always dependent on research methodology. I mean, you can use any method, लेकिन for research methodology there are particular, it has particular characteristics, certain areas है उसका, या एक खास उसकी technique है, और again that depends on कि which area are you doing your research on. Pure sciences में कुछ और आएगी और सोशल साइंसेज में कुछ और आएगी। सो मेथड जो है टोटली रिसर्च मेथोडोलॉजी पे डिपेंडेंट है, और कोई भी हो सकता है मेथड, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू हैव स्ट्रिक्टली टू फॉलो देम। Research methodology involves the learning of various techniques to conduct research and acquiring knowledge to perform tests, experiments, surveys, and critical analysis. A research method aims at finding solutions to research problems. Research methodology ensures the employment of correct procedure to solve the problem. Research methods are the end of any scientific or non-scientific research, and research methodologies pave the way to choose appropriate research methods, and thus is the beginning of any research. So to sum up, we can say that in research methodology, we not only talk about research methods, but also consider the logic behind the methods we use in the context of our research study, and explain why we are using a particular method and why we are not using others, so that the research results are capable of being evaluated either by the researcher himself or by others. And these are some of the references. I'll share these with you later on. So I'm sure कि अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस का पता चल गया होगा. Yes, ma'am. Okay. अच्छा, now फिर कमिंग बैक टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगर हम लोग फिर उसकी बात करते हैं तो strategy, I mean, why is strategy important in research? Yeah, what would be the difference between research and strategy? Sorry, method and strategy. Ma'am, जी, should I respond? जी, please go ahead. Strategy, just like methodology, is a broader term, and you know, एक strategy आपने पूछा था, दूसरा क्या पूछा था? Method. Method. So method is the tactic. Method is the tactic. So it's like research method. जितना difference methodology और method में है, इतना ही इसमें.
जितना लाइक आपने कहा कि मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटजी में उतना ही डिफरेंस है जितना रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेथड में है। जी, तकरीबन इसी तरह से मुझे, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। नहीं, but strategy, तो we say कि we adopted so and so strategy to achieve our goal, and जी, then again we say कि method is something that we use to achieve our goal. ओके। uh, I mean, is there any difference between strategy and method or not? मैम मेथड्स तो सिंपली जो जो हम अडॉप्ट करते हैं एक रिसर्च में उसको कहते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया है। Mm-hmm. स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में वो पर्टिकुलर कंडीशन है जो हम उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए यूज करेंगे। Okay, exactly, yes. Like for example, कोई मुझे मिसाल देंगी आप तूबा? मैम फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्च की मेथड की बात करते हैं और मैं रिसर्च मेथड में यूज करती हूँ सर्वे मेथड हाँ, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, तो ये मेथड हो गया। सही। स्ट्रैटेजी में मैं ये यूज करूंगी कि मैं जो सर्वे कंडक्ट कर रही हूँ वो फील्ड सर्वे होगा या फिर वो ऑनलाइन सर्वे होगा। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होगी मेरी। सही। अच्छा, ना इसमें अब वही है ना, आई जस्ट रीड इट आउट फॉर मी जो मेरे पास है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड स्ट्रेटेजी इन टीचिंग, ठीक है? तो स्ट्रेटेजी का वी कैन से कि हाउ टू सेलेक्ट थिंग्स एंड गोल्स, or method is meaning how to applicate those things and achieve them. Am I making sense? मैम कैन यू प्लीज रिपीट इट वंस? मैंने कहा कि strategy means how to select things and goals, ठीक है? I mean, we are in a phase के we want to select things and goals, while method is meaning how to applicate those things and achieve them. मैम इसको अगर हम इस तरह मैं जो ग्रास कर सका हूँ, दैट इज के strategy is the approach towards the problem and method would be the tools required to solve the problem. Okay, yes, good enough. I mean, पता है इसमें अब आई विल नॉट restrict you. Come up with your own thinking of how you understand a terminology, and then start using that till you are able to achieve your objective, goal, aim, जो भी है आपका। इसमें do not restrict yourself, do not limit yourself to a particular explanation, जो भी आपके जहन में आता है। like for example, अभी मैंने कहा कि this method is things and goals, sorry, strategy को हम थिंग्स एंड गोल्स में वो कर लेते हैं, देन मेथड को वील टेक इट एज हाउ टू एप्लीकेट दोज थिंग्स एंड अचीव देम। तो एंड वाहिद हैज कम अप विद अ वेरी गुड डेफिनेशन कि जिससे हम और वो हो सकते हैं। So do not restrict yourself to one explanation of a terminology. What I believe is a theory is strategy is like applying theory for on your problem. Like Okay. a theory, the way you theory is like lenses, different lenses of glasses. जिस Mm-hmm. तरह के उसमें शेड्स हैं उसी तरह से एक चीज प्रॉब्लम को देखते हो, राइट? जिस तरह के भी Okay. आप तो आई गेस स्ट्रेटजी इज लाइक अप्लाइंग theory to your problem. Okay. Can you give one example? Uh, अगर मेरा काम था लाइक व्हाट आई डन विद रिसर्च इज उसमें मैंने mhm. रियलिस्ट अप्रोच अपनी जो थी, रियलिस्ट अप्रोच अपना सारा प्रॉब्लम जो है वो मैंने देखा है। ठीक है। मेथड्स हैं बाकी स्ट्रेटजी डिफरेंस। Rush, you are एम आई breaking ऑडिबल? up.
मैम मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आपकी क्लियर है। अच्छा, आई थिंक वी हैव लॉस्ट रूश। हाँ जी बिल्कुल, शी वाज ब्रेकिंग अप, आई टोल्ड हर आई थिंक शी इज जी, विद अस, बट ये कि उसकी आवाज वो हो रही थी। लेकिन इट वुड हैव राइट। बीन गुड कि शी वुड quote some examples from her own experience, because जी, this is how we are going to go about this whole discussion कि किस तरह से राइट। हम लोग इसको वो कर सकते हैं। सो strategy, method, methodology, I mean, both, I would say that both strategy and method are dependent on methodology. We can, adopt one strategy for one research, or two or three or four strategies for, getting a result in our research, but we cannot, choose uh, different research methodologies for again achieving the same objective. So both are, I think, we can say that dependent on research methodology. Or research methodology then again define the role of method, okay, how it is going to go about or how it is how a method is to be adopted to achieve our objectives, which strategy is to be adopted to achieve our objectives. So research methodology जो है ये एक तरह से डिवाइस करती है स्ट्रेटजी भी और मेथड भी। आई मीन अगर आप लोग बीच में कुछ इफ यू वांट टू ऐड वो आप लोग वो करते रहें। मुझे जो जो चीज़ें अब जनरली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें आज की उसके लिए मुझे मिल रही हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन बीच में आप लोगों को भी अगर कोई आइडिया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप प्लीज़। मैम ये कैन आई? जी जी प्लीज़। जी, आई जस्ट गूगल्ड अप, तो ये जी बड़ा सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन इसमें आई है। A जी। method typically involves a series of pre-specified actions that can be followed in a given situation. ओके। So method जो है वो छोटे छोटे से series of specified actions हैं, and by contrast, a strategy is a higher order mental construct which provides us with the best cost-effective option for solving a problem. ठीक है, वेरी गुड। लेकिन उसके लिए फिर अगेन आई कैन वी अज्यूम दैट बोथ स्ट्रेटजी एंड मेथड्स आर डिपेंडेंट ऑन मेथोडोलॉजी? जी जी, ये तो पहले मेरे जो फर्स्ट कमेंट था हाँ ना। उसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी। जी, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि अच्छा, अब नाउ यू हैव रेड इट आउट फ्रॉम सम आर्टिकल या जो भी है उससे, लेकिन उससे रिसर्च। पहले आपने यही कहा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सी इट एंड हाउ यू एक्सप्लेन इट, एंड कि ये गलत नहीं है। आपने जो भी कहा दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज वी फाउंड अदर सोर्सेज टू authenticate our statement, to support our statement or to second our opinion. तो राइट। रिसर्च में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सॉरी ये मेथड और स्ट्रेटजी में कि जो भी हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी हमारी है उसमें हम लोग कई मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज भी अप्लाई कर सकते हैं टू अचीव अ गोल। फिर जिस तरह के रूच की शुरू की बात हम लोगों ने सुनी, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, ठीक है, तो वो भी अगर हम एज अ स्ट्रेटजी या वो करते हैं मेथड लेते हैं theoretical perspective में within research methodology while conducting our research, तो उसमें हम लोग कई theories apply करते हैं to be able to say authentically that so and so theory can be applied on this or that situation। क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा जो मैं अपने रिसर्च की आपको एग्जांपल दूंगी कि उसमें
इट वाज बेसिकली जो वेरिएबल्स और इनवेरिएबल्स होते हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस भी करते रहेंगे, वेरिएबल्स हैं, इनवेरिएबल्स हैं, और जितने ये इसके डायमेंशंस हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, लेकिन जनरल डिस्कशन के लिए कि मेरे my title was very focused, and a title of research is to be focused, simple, and it should reflect your research, or the whole thesis. Okay, it is like a mini thesis ये जो आपका topic है. So mine was कि evangelicals influence on US foreign policy, ठीक है, and then its impact on पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, और फिर दो वो जो एरा मैंने लिया हुआ था, तो एरा से एक तो पता चल जाता है कि दिस टाइम फ्रेम इज द पीरियड ऑफ President Bush as two-time president of the United States, and then evangelicals were an interest group, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप था और प्रेशर ग्रुप है, और उसका इन्फ्लुएंस यूएस फॉरेन पॉलिसी पे जनरली लाइक हम लोग देखते हैं. फिर एवेंजेलिकल्स जो थे देवर आई मीन लाइक उसको फिर हम लोग कई डायमेंशन, मेरा चूंकि फोकस पाकिस्तान के ऊपर था, तो आई ट्राई टू स्टडी एवेंजेलिकल्स वाइल फोकसिंग ऑन पाकिस्तान, और उनका फोकस पाकिस्तान के ऊपर ये था कि उन दिनों में मतलब ये है वेरी, मतलब ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज आई मीन आई कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑन दिस सब्जेक्ट कि इवेंजेलिकल इंटरेस्ट ग्रुप है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्यों अपने आप को सलाफिस्ट जो हैं उनके साथ अपने आप को वो करते हैं, कंपेयर करते हैं या बराबरी करते हैं उनकी, के जिस तरह सलाफिस्ट इस्लाम है इस तरह इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी है. लेकिन वो है कि वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है फॉरेन पॉलिसी पे. फिर फॉरेन पॉलिसी पे उनका इन्फ्लुएंस इस तरह से ज़्यादा हो जाता है कि दिस इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप दे स्टार्टेड सीकिंग अलाइज, और अलाइज उनके कौन होते हैं, पॉलिसी मेकर या डिसीजन मेकर. सो प्रेसिडेंट बुश हिमसेल्फ, और फिर प्रेसिडेंट बुश का जो स्पीच राइटर पीटर मर्स्टन था कि कुछ इस तरह का नाम था, जिसको इंटरव्यू भी मैंने किया हुआ था, ही हिमसेल्फ वाज एवेंजेलिकल. तो और फिर एवेंजेलिकल ने किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया, लाइक ये दो टर्म्स थे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा फंडिंग होती रही फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने फंडिंग की. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड द स्टेट. येट प्रेसिडेंट बुश वाज एबल टू पास 2 bills through his executive powers, presidential executive powers, जिसमें the state was funding faith-based organizations. बाकी एनजीओ को तो स्टेट फंडिंग करती थी, लेकिन यहाँ पे उसने आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की वायलेशन की, येट देयर वाज नो वन टू चैलेंज इट. लिखते रहे लोग, सारा कुछ करते रहे, बट ड्यूरिंग दोज 2 terms, his 2 terms, प्रेसिडेंट बुश वाज एबल टू फंड देम, और बहुत ज़्यादा फंडिंग की, and that I mean different states में that money started pouring in, that was utilized to get their objectives. Objective उनका obviously ये जो evangelicals हैं, जैसे कि हम लोग evangelist हैं या हम लोग बिलीव कर इवेंजलाइज करने में बिलीव करते हैं, जैसे हम लोग तबलीग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने मज़हब की तरफ, इस तरह इवेंजलिकल्स का ये रोल है. Now you see, इसमें मैंने different methods I tried to apply, different strategies I applied. Like for example, interviewing people. There was one blunder that I made. वो अब मेरी strategy चूंकि मैंने नहीं बनाई हुई थी पहले से, या method के ऊपर मैंने focus नहीं किया था कि मैं interviews इस तरीके से लूँगी और strategy मैं इस तरह से adopt करूँगी, ये मेरी strategy होगी. So I mean
एट टाइम्स वो रिसर्च के जो आपके वो आते हैं फाइंडिंग्स होती हैं, वो बाज़ दफ़ा मिक्स हो जाती हैं. लाइक वन ऑफ द पर्सन दैट आई इंटरव्यूड वाज दैट evangelical since are focusing on, because India में they were very active. So Indian government ने स्टेट ऑफ उड़ीसा में एक एक्ट पास किया. स्टेट ऑफ उड़ीसा जो था, वहाँ पे एक बिल पास किया कि जिसके तहत कोई हिंदू कन्वर्ट नहीं हो सकता था. और इस टाइम में जब ये इन्वेजन यूएस यहाँ पे अफगानिस्तान में था, यहाँ पे आपने बहुत सुना होगा कि जी सो एंड सो जो था वो उसने मजहब चेंज किया इस्लाम से, वो मलहद हुआ या इस तरह की बातें. सो वहाँ पे उन्होंने ये किया. वहाँ पे वो क्या करते थे कि इनका टारगेट वुड बी द लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी. अब ये लोग भी दे वर ऑल्सो यूजिंग स्ट्रेटेजी. It was not that they were not using a strategy for their achieving their own goals. They were using a strategy. They had their own methods. और वो किस तरह से वो कर रहे थे कि मतलब they were funding those people. They were creating jobs for the lower strata of the society. In Pakistan and particularly in Khyber Pakhtunkhwa, when we had MMA government over here, they even went up टिल बन्नू. वहाँ पे उन्होंने रिसर्च की, स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च की, यूथ के ऊपर उन्होंने यूथ को इंगेज करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च की. बन्नू से उन्होंने मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ने के लिए भेजा स्कॉलरशिप पे. नाउ यू सी दीज आर स्मॉल थिंग्स. ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी वाज वेरी एक्यूरेट थी. मेथड उनका बड़ा सही था. स्ट्रेटजी मतलब जिसको कहते हैं नहीं कि माइन्यूटली भी उसमें कोई थोड़ी सी वो नहीं हुई थी. तो जब एक गरीब उसको आप को मतलब कोई इंसेंटिव देते हैं बच्चे को या फैमिली को, तो ऑब्वियसली वो तो उस इंसेंटिव को देखते हैं कि क्या फ़ायदा उनको उससे पहुंच रहा है. तो ऑब्वियसली अगर मैं उसे कहूँगी कि सो एंड सो इज़ अ बैड गवर्नर या गवर्नेंस इस मुल्क की अच्छी नहीं, या शहर की या गांव की अच्छी नहीं है, यहाँ का जो चीफ है गांव का वो अच्छा नहीं है, और इसको इस तरह से होना चाहिए. सो इसी तरह आप लोग माइंड सेट चेंज करते जाते हैं. तो उनकी स्ट्रेटजी, उनका मेथड जो था वो सक्सेसफुल था. आई आस्क्ड वन ऑफ द पर्सन के इंटरव्यू के दौरान कि आप लोग बहुत से कन्वर्ट कर रहे हैं और वो है हालांकि इस्लाम जिस तरीके से फैल रहा है और सारा कुछ, तो ही सर कि हाँ वी आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई आवर सेल्फ, कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम बहुत फैल रहा है तो क्रिश्चियनिटी क्यों. तो स्ट्रेटजी ठीक थी, या जो क्वेश्चनियर मैंने जिस तरह से जिस मेथड से जिससे बनाए थे, but I went wrong when I repeated his answer in front of another evangelical. वो like he was सरप्राइज्ड भी था, वो गुस्से में भी मुझे लग रहा था कुछ उस तरीके से कि मुझे लगा कि मुझे नहीं कर इससे सवाल पूछना चाहिए था, इसको बताना नहीं चाहिए था कि मेरे दूसरे जो इंटरव्यूई है उसने ये कहा. So all these things matter in research methodology, and when we say that there is a difference between strategy and research methodology and method and research methodology, तो फिर हमें यहाँ पे पता लगता है कि किस तरह से research methodology हमें एक डायरेक्शन पे ले जाती है जिससे हम लोग वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो हम पूरा मतलब अचीव कर सकें एक सक्सेसफुल तरीके से. लेकिन अगर हमारा हम मेथड के ऊपर जाएं या स्ट्रेटजी के ऊपर जाएं और रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो ना करें, तो फिर बाज़ दफ़ा ब्लंडर्स हो जाते हैं. एनी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कोई पूछ रहा हो?
Okay. So research का फिर we can, I mean, simple words say कि what does research mean? We can say that there are several ways of obtaining answers to our questions, and these ways or methods range from fairly informal, based upon different kinds of implications, like, for example, clinical implications had to strictly scientific, adhering to conventional expectations of scientific procedures. So research is one way of finding answers to our question. And when we say that we are undertaking a research study to find out answers to our question, we are implying that the process being applied is, okay, number one, is being undertaken within a framework of a set of philosophies, okay? Then using procedures, methods, and techniques that have been tested for their validity and reliability. And it is designed to be unbiased and objective. Okay, biased now or subjective now, like I just said कि मतलब अगर हम लोग सब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं, वो लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, any example that comes to your mind, unbiased objective research में और सब्जेक्टिव रिसर्च की कोई एग्जांपल अगर आप लोगों को आती हो. मैम प्री-assumption. लाइक हाउ, किस तरह से? मैम जैसे आप assume करके जा रहे होते तो basically you basically are forming a biased approach towards the problem. Okay. Before the title is there with you and you say that this is like this and it is like this, and you confirm your thoughts prior to the problem being solved. Exactly. This is one way of conducting a research that is subjective. And then again, like for example, you are given a target, ठीक है, या you are given a project, और वो project में they in a way dictate their TORs जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और फिर they say कि जी हमें ये डाटा चाहिए, तो you do it according to their wishes, ठीक है. That can also be हमारी assumption तो is one way of doing a subjective research, but doing it according to others जो उनके वो होता है, जिस तरीके से वो हमें चाहते हैं कि हम करें, वो भी ऑब्जेक्टिव हो जाती है. फिर देन देयर इज जो बायस्ड वो हो जाती है, तो उसमें ये है कि वी आर बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है, लाइक अच्छा, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. क्रिस्टिन फेयर, आई हैड इंटरव्यूड हर एज वेल, ठीक है. वो अपने आप को ये उसके ऊपर बड़ा शी claimed to be an authority on religious extremism, radicalization, militancy, terrorism in Pakistan and South Asia का कहती है. When I interviewed her, she was very pro-Pakistan, ठीक है. उस वक्त she was, I think, teaching one semester at LUMS, और she was like वो अब्यूसिव लैंग्वेज तो उसने नहीं यूज की अगेंस्ट प्रेसिडेंट बुश एंड हिज पॉलिसीज, लेकिन कुछ अच्छी जबान भी नहीं यूज की उसने. फिर व्हेन शी लेफ्ट, यहाँ पे रहते हुए वो पंजाब के सेंट्रल पंजाब भी गई, अर्बन एरियाज में और डिफरेंट पंजाब के इलाकों में. फिर यहाँ पे भी आके उसने पेशावर यूनिवर्सिटी में शी वाज put up by the authorities at that time. She was put up in university guest house. वहाँ पे वो she would freely roam around, ठीक है. She would go to the gym, meet people over there. She would walk. During her walk, she would meet ladies. बच्चों से वो बात करती थी. मैं जब उसके पास गई, I came to know about her through
might happen that she's here and you would be able to get time from her for तो उसको मैंने email किया और फिर उसने कहा yes तो वो like she was very pro Pakistan in her during her interview. Later on when she went back तो वो जॉर्ज टाउन में उसको एक आई थिंक कोई असाइनमेंट या मिली या एक टर्म उसको पढ़ाना था एंड देन शी वेंट टू रैंड कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है एंड फिर देन आई गॉट टू study her research पाकिस्तान के ऊपर उसका था एंड आई फाउंड दैट वेरी बाइस्ड और सब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं क्योंकि वो उस औरत के ख्यालात मुझे नहीं लगते थे जिससे मैं यहाँ पे मिली हुई थी. शी वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. मतलब एक तरह से हर एक चीज पाकिस्तान के ऊपर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर थोप रही थी. सो इस तरह से भी आपकी रिसर्च जो है वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो जाती है. फिर जब हम लोग फिलोसफिकल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो दैट मे स्टेम फ्रॉम वन ऑफ द सेवरल पैराडाइम्स एंड अप्रोचेस इन रिसर्च like for example positivist, interpretive, phenomenology, action or participatory, then feminist hai, qualitative, quantitative, and the academic discipline in which I mean we are trained. Like for example अगर हम लोग IR की बात करेंगे तो I mean there are different paradigms that we can adopt in our research methodology, different many, few or only one. Well, that depends on the field of research that you are conducting. Here, validity ka question again would be very important. Okay? The concept of validity can be applied to any aspect of the research process, okay? Because it ensures that in a research study, correct procedures are applied to find answers to a question. और लाइक एक मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेटजी आप उसको कह दें या प्रोसीजर तो आई वुड नॉट कॉल दैट कि मेरी एक स्ट्रेटजी या एक मेथड गलत था. तो जो क्वेश्चंस वहां से आ रहे थे दोज सॉरी क्वेश्चंस के जवाब जो आ रहे थे दोज वर ऑल एक तरह से डिफेंसिव थे. वो अपने आप को लाइक एवेंजेलिकल था तो ही वाज वेरी डिफेंसिव व्हाइल रिप्लाइंग टू my questions, responding to my questions. फिर आता है क्वेश्चन रिलायबिलिटी का. मतलब वैलिडिटी तो हो गया. रिलायबिलिटी देन अगेन रेफर्स टू quality of a measurement procedures that provides repeatability and accuracy. Because unbiased and objective means that you have taken each step in an unbiased and objective manner and drawn each conclusion to the best of your ability and without introducing your own vested interest. I just gave you one example of that lady Christine Fair की मैंने आपको example दी. और या जो एक दो डिस्कशन हम लोगों ने की आप लोगों ने जिस तरह से बात की. So, जो researcher है या author है, we can say कि makes a distinction between bias and subjectivity. Subjectivity is an integral part of your way of thinking that is conditioned by your educational background है, discipline है, philosophy है, experience है, skill है, even school of thought. या philosophy में उसी को हम लोग ले लेते हैं कि which school of thought you belong to. तो मतलब you are the best person to judge your research कि whether it is biased, subjective, objective, unbiased, आप वो उसमें वो कर सकते हैं. अच्छा, okay. Another example, and I quoted from this book जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि for example a psychologist may look at a piece of information differently from the way in which an anthropologist or a historian
looks at it. Bias, on the other hand, is a deliberate attempt to either conceal or highlight something. Adherence to the three criteria mentioned above enables the process to be called research. Therefore, when we say you are undertaking or we are undertaking a research study to find the answers to so and so question, this implies that the methods that we are adopting fulfill these, expectations. Am I making some sense? Yes, ma'am. Okay. Any question, Yagar, if you want to add something to what we have discussed so far? Acha, so moving ahead, then the degree to which certain criteria are expected to be, fulfilled varies from discipline to discipline, and so the meaning of research also differs from one academic discipline to another. For example, then again, I'll give you example. The expectations of research process are markedly different between the physical and social sciences. In physical sciences, a research endeavor is expected to be strictly controlled at each step, whereas in social sciences, rigid control cannot be enforced and sometimes is not even demanded. अब इसमें अगेन वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि रिजिड अप्रोच भी हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं एज फार एज, क्योंकि जब हम कंट्रोल रिजिड कंट्रोल करेंगे तो वो तो सब्जेक्टिव या बाइस्ड हो जाएगी. तो वी कैन नॉट क्लेम कि हम लोगों ने एक अनबाइस्ड और ऑब्जेक्टिव रिसर्च की है जब हम लोग मतलब कंट्रोल्ड rigid control social sciences के ऊपर apply करेंगे. And within social sciences, the level of control required also varies markedly from one discipline to another, as social scientists differed over the need for research process to meet the expectations. ठीक है? Despite these differences among disciplines, their broad approach to inquiry is similar. The research model, the basis of, the research model is based upon this broad approach. अभी सोशल साइंसेज में मैंने आपको एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इवन जेंडर स्टडीज, इसमें अगर आप लोग देखते हैं विद इन सोशल साइंसेज में, इसमें भी वो लेवल ऑफ कंट्रोल जो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि बाद में यू हैव टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा थ्रू सर्वेज, और सर्वेज में जैसे मैंने आपको कहा कि आपने सैम्पलिंग करनी है, आपने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करना है, फिर सैम्पलिंग क्या होगी आपकी, किस तरह से आपने एक ही सोशल क्लास के लोगों को आप वो करते हैं या विद इन सोसाइटी आप डिफरेंट कम्युनिटीज करते हैं, फिर विद इन दैट सोसाइटी इन डिफरेंट कम्युनिटीज हाउ मेनी पीपल आर यू selecting for your research to know their views about a particular issue. तो वो इस तरह से वो भी डिफरेंट करता है. वो कंट्रोल आपके हाथ में तब आ जाता है व्हेन यू आर सैम्पलिंग, बट वो सैम्पलिंग भी ऐसी है कि यू आर ट्राइंग नॉट टू conduct your research on a particular community when your study is a comparative study. आपने दोनों communities को देखना होता है, because एक अनबाइस्ड रिसर्च के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है. फिर उन दोनों कम्युनिटीज़ में देयर माइट बी एक वो डिफरेंस, एक मेंटल डिफरेंस होगा, एक सोशल डिफरेंस होगा. ये मेंटल कैलिबर एक बंदे का क्या, एक विद इन वन कम्युनिटी
how mental caliber are different. An educated person will of course be different from an uneducated person. फिर एक मिडिल स्कूल तक जो एजुकेटेड है वो ऑब्वियसली एक ग्रेजुएट से बहुत वो होगा, उसके पास जो नॉलेज होगी दैट वुड बी लिमिटेड नॉलेज. तो इस तरह से वो कंट्रोल आप के अपने हाथ में है सोशल साइंसेज में, लेकिन हर एक डिसिप्लिन के लिए इट वुड बी डिफरेंट. नाउ बिगिनर्स इन रिसर्च के अगर हम लोग बात करते हैं तो you should understand that research is not all technical, complex, statistics, and computer. It can be very simple activity designed to provide answers to very simple questions relating to day-to-day activities. On the other hand, research procedures can also be employed to formulate intricate theories or laws that govern our lives. The difference between research and non-research activity is in the way we find answers to our questions. So for a process to be called research, it is important that it meets certain requirements and possess certain characteristics. जो अभी हम लोगों ने बात की कि characteristics होती हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की या कोई कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे अगर हम लोग इधर उधर हो जाएं तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज यू नो रिसर्च मेथोडोलॉजी. इसी तरह रिसर्च की भी यही पोजीशन है. So to identify these requirements and characteristics, we need to go through certain definitions of research. First one is by Grinnell, quoted in his book, and I quote, "The word research is composed of two syllables, re and search." I think कि ये तो हम लोग वैसे ही आप लोग जानते हैं कि what is research, तो I'll not repeat it. अगर आप लोग कहते हैं तो I'll just read it out for you. क्या कहते हैं आप लोग? जी मैम, please you can read it out. Okay, thank you. So the word research is composed of two syllables, re and search. The dictionary defines the former as prefix meaning again, anew or over again, and the latter as a verb meaning to examine closely or and carefully, to test and try, and to probe. Together they form a noun describing a careful, systematic, patient reading, study, and investigation in some field of knowledge undertaken to establish facts or principles. And then he further, Grinnell further adds, research is a structured inquiry that utilizes acceptable scientific methodology to solve problems and create new knowledge that is generally applicable. Another social scientist has explained research as it draws a parallel between the social research process, which is considered scientific, and the process that we use in our daily life. So according to Lundberg, scientific methods consist of systematic observation, classification, and interpretation of the data. So interpretation, yeah, analysis of the data. Now, obviously, this process is one in which nearly all people engage in the course of their daily lives. The main difference between our day-to-day generalization and the conclusions usually recognized as scientific method lies in the degrees of formality, rigorousness, verifiability, and general validity of the latter. इसके बाद अगर हम लोग ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च प्रोसेस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स.